हेलो नमस्ते। कैसे हैं सब लोग? आवाज़ आ रही है तो बता दीजिए। ठीक है। कैसे हैं? भारत में क्या चल रहा है आजकल? तो गर्मी शुरू हुई क्या? अभी ठंड तो ख़त्म हो गई ना। मैं अभी फिलहाल जापान में हूँ, तो इंडिया में क्या चल रहा है वो तो मुझे नहीं पता। तो आप लोग थोड़ा कमेंट्स में लिख सकते हैं तो बढ़िया। और आप लोगों में से कितने लोग जापानीज की पढ़ाई कर रही है ये भी बता दीजिए, क्योंकि मुझे नहीं पता। आजकल मैंने जापानीज सिखाना शुरू किया है, और पता नहीं कितने लोगों को इंटरेस्टेड है, लेकिन लगता है कि कुछ लोग हाँ अच्छे से पढ़ाई कर रहे हैं। तो देखते हैं। हम्म। तो हाय, मानल त्यागी, आई एम फर्स्ट, हाय हाय। आई एम सेकंड, हाय हाय। लेट अप नहीं, लेट नहीं हुई अभी। हाँ, थोड़ा 1-2 मिनट के लिए लेट हो गई, पर इतना भी लेट नहीं है प्लीज। थोड़ा सा बी नाइस टू मी प्लीज। बिकॉज थोड़ा थोड़ा होता है ना, कभी कभी देर हो जाती है और लोग भी धीरे धीरे आ जाते हैं, इसलिए ठीक है, कोई बात नहीं। अनिमे से थोड़ा जापानीज सीख लिया, अच्छा बढ़िया। रिंका व्हाट्सअप? आई एम गुड एक्चुअली। तो एक्चुअली कुछ दिन हुए ना, लास्ट टाइम मैंने लाइव स्ट्रीम किया था, पता नहीं कुछ 1 हफ्ते पहले। तो मैं जापानीज खाने वाले वीडियोस डालने वाली थी, लेकिन कुछ एडिटिंग में समय लग रहा है, तो वो तो बाद में आएंगे। लेकिन मुझे लगा चलो ठीक है, फिलहाल अभी लाइव स्ट्रीमिंग कर लेती हूँ। यू नो रेंका, आई एम वॉचिंग फेयरी टेल एपिसोड 165। अच्छा, फेयरी टेल अभी तक मैंने नहीं देखी है। आप रिकमेंड करेंगे क्या? अभी मैं फिलहाल देख रही हूँ डॉक्टर स्टोन एंड माय हैप्पी मैरिज, 私の幸せな結婚, or soul, no no no, it's not like that. Solo leveling. Also 薬屋の独り言, I don't know how to say that in English, but कई 4-5 animes follow कर रही हूँ इस सीजन के लिए. But I haven't watched Fairy Tail, so I should maybe. Yes, you should watch it. It is about magic and friendship. Sounds good. Okay, I'll watch it. And what else? Like, which anime are you following these days? Let me know. I don't know which anime I should, but like Naruto and the One Piece, I really have to watch it. Like, I obviously I have watched it, but I haven't finished it, and I feel like I should start watching them again, because obviously people in India, मतलब सबको मालूम है, तो मुझे लगता है वन पीस एंड नारुतो थोड़ा और देख लेना चाहिए. But I haven't watched it yet. Maybe I should. Anyway, so today's okay, Renka, when you will make a Discord server? I don't know. Banana है क्या? I don't know. So today's topic is Japan is cheap. Cost of living in Japan. So मुझे लगता है इंडिया के लोग, थोड़ा कुछ लोगों को लगता है कि जापान में रहना बहुत महंगा है, लेकिन मुझे लगता है जापान इतना भी महंगा नहीं है. बिकॉज आई हैव बीन टू मुंबई एंड मुंबई इज़ क्वाइट एक्सपेंसिव टू. एंड मुझे लगता है मुंबई का प्राइस जो है जापान के, मतलब इट्स गेटिंग वेरी क्लोज. एंड अभी अगर of course depending on which kind of life you want to live, but Japan isn't as expensive as you might think. So I just wanted to clarify this. अगर आप लोग जापान में आना चाहते हैं, पढ़ाई करना चाहते हैं, रहना चाहते हैं, तो आई थिंक ये बेहतर है कि आप असली जापान का प्राइस जानेंगे, है ना? Okay, I didn't watch Naruto, One Piece. I left them in between. Yes, make a Discord server. ठीक है. Okay.
शुरू करते हैं। जापान के प्राइस कैसा होता है? वेट, लेट मी ओपन दिस। Wait, थोड़ा wait, don't start the slideshow yet. Okay. ओके, सो इमेजिन करते हैं कि आप जापान में एज अ स्टूडेंट या वेट, ये क्यों शुरू हुआ? वेट, प्रॉपर्टी स्लाइड शो नहीं चाहिए, मैनुअल करना है। ओके, मैनुअली ठीक है। ये तो रुकता नहीं क्या? वेट, स्लाइड शो बंद करना थोड़ा एक एक। ओके, नाउ इट्स आई थिंक स्टॉप्ड। ठीक है, चलो ठीक है। तो अगर आप एज अ स्टूडेंट जापान में रहना चाहते हैं और लाइक फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर लाइक कंपनी में शुरू शुरू में अगर जापान में काम करने जा रहे हैं, तो ऐसे लेट्स नॉट इमेजिन दैट यू आर वेरी रिच गाय। देखते हैं कि ग्रेजुएशन के बाद अभी थोड़ा मौका ढूंढ रहे हैं जापान में काम करने के लिए या पढ़ाई करने के लिए। तो सबसे पहले रेंट की बात करते हैं। सबसे सस्ता और छोटा घर जो है इट्स लाइक अ स्टूडियो अपार्टमेंट टाइप, कि एक कमरा ही है वहाँ पे, जैसे अभी फोटो में दिख रहा है। बेड रखेंगे, टीवी रखेंगे, और हाँ थोड़ा सा छोटा सा टेबल रखेंगे, एक अकेले रहने के लिए जो काफ़ी है। ये ऐसे घर में अगर रहना चाहते हैं, तो आई वुड से 30,000 रुपीज़ टू 70,000 इंडियन रुपीज़ पर मंथ, एक महीने के लिए। ठीक है, ये अगर टोक्यो में रहेंगे तो आई थिंक इतना ही है। एंड अगर थोड़ा सा कंट्री साइड में रहेंगे तो आई थिंक इट्स चीपर। लेकिन जापान के टोक्यो में अगर एक कमरा लेना है ऐसा छोटा सा, तो आई थिंक इट विल स्टार्ट फ्रॉम 30,000 रुपीज़। ठीक है, और वाटर इलेक्ट्रिसिटी गैस ये इंक्लूडेड नहीं है। ये अगर इतना इस्तेमाल नहीं करेंगे तो तीनों मिला के आई थिंक इट वुड बी 5,000 रुपीज़। और हाँ, जानते होंगे आप कि मुंबई में 30,000 रुपीज़ तो लगता है अच्छी, मतलब डिसेंट स्टूडियो अपार्टमेंट रेंट करने के लिए, है ना। दिल्ली में या अलग जगह में तो थोड़ा सस्ता भी पड़ेगा, पर मुंबई में तो इतना ही है मेरे हिसाब से। सो आई थिंक जापान इज नॉट सो एक्सपेंसिव कंपेयर टू मुंबई, डोंट यू थिंक? अच्छी व्यू होना चाहिए, व्यू लाइक विंडो से। ये तो इतना आसानी से नहीं मिलता यार। व्यूज की बात छोड़ दीजिए, इफ यू वांट द गुड व्यूज और भी महंगा होगा। So a lot of Japanese people, like students, live around like 30,000 or 30,000 रुपए में तो बहुत गंदा, मतलब गंदा नहीं है, बहुत छोटा सा कमरा ही मिलेगा। So I think most students live 40,000 rupees per month, तो उतना मतलब तो लगता है। ओके, इज इट चीप और एक्सपेंसिव बता दीजिए कि ये आपके, मतलब दिल्ली की बात करेंगे तो थोड़ा महंगा लगेगा, बट आई थिंक मुंबई में तो इतना ही है। सो इट्स नॉट दैट एक्सपेंसिव इन माय ओपिनियन। व्हाट डू यू थिंक? गुड नाइट डियर मायो सा। अरे मायो कौन है? अच्छा, मैंने देखा है मायो जी ने वो जो इंस्टाग्राम पे हमारा रेंका स्ट्रीम का स्टोरी डाला था, शेयर किया था, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। बट थैंक यू प्रिंस इंडिया, गुड नाइट। ठीक है, और फिर बात करते हैं इंटरनेट, क्योंकि इंटरनेट इज मतलब नेसेसरी आफ्टर रेंट, खाने से भी ज़रूरी है ना। इंटरनेट तो ज़िंदगी में होनी चाहिए, नहीं तो आप हम रह नहीं सकते। और वैसे मैं तो फ्यूचर हूँ, इंटरनेट की सख्त ज़रूरी है। अच्छी व्यू होना चाहिए। हाँ, एक व्यू की बात छोड़ो। अच्छा ठीक है, ओके एनीवे। सो द इंटरनेट अगर फोन स्मार्टफोन की बात करेंगे तो और थोड़ा सस्ता है, आई थिंक 2,000 रुपीज़ आई थिंक से स्टार्टिंग होगा। अच्छा, गुड नाइट रिंका जी, गुड नाइट, थैंक यू सो मच।
हाँ ठीक है। सो द स्मार्टफोन के इंटरनेट के लिए आई थिंक 2,000 रुपये या लाइक 2,500 रुपये। एंड देन अगर घर के इंटरनेट की बात करेंगे तो अगेन लाइक 2,500 रुपये लगते हैं। सो दोनों चाहिए ना। दोनों मिलके आई थिंक 5,000 रुपये तक तो नहीं पहुंचेंगे। आई थिंक दोनों मिलके फोन और घर के इंटरनेट दोनों मिला के उससे 4,000 रुपये लगते हैं। ठीक है। तो मैथमेटिक्स में मैं आगे नहीं हूँ, जो भी मैं बोलती हूँ ना दिमाग आपके दिमाग के अंदर थोड़ा कैलकुलेट कीजिए। ठीक है। एंड अब बात करते हैं खाना पीना। ठीक है। जापान में टैप वाटर नल का पानी पी सकते हैं, इसलिए खरीदने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन कभी कभी तो पानी मतलब बाहर पीना चाहते हैं, उसी समय यू कैन बाई लाइक 60 रुपीज़ पानी की बोतल। 500 मिलीलीटर के पानी की बोतल 60 रुपीज़ है। इंडिया के हिसाब से ये थोड़ा ज़्यादा महंगा है। आई थिंक इंडिया में तो छोटा वाला कितना अभी 15-20 रुपए में, आई थिंक 20 रुपए हो गए ना। इंडिया भी महंगा होते जा रहे हैं। So I think the 500 milliliter water is like I think 20 rupees. आप लोग बता दीजिए। वाईफाई मंथली, या आई थिंक वाईफाई मंथली 2,500 रुपये। तो घर वाला घर का इंटरनेट तो इतना ही लगता है। एंड स्मार्टफोन भी आई थिंक अगर अच्छा कनेक्शन चाहिए तो आई थिंक 2,000 रुपये तो लगते हैं। सो लाइक इंटरनेट is relatively more expensive in Japan compared to India, क्योंकि इंडिया में सस्ता, बहुत सस्ता प्लान्स है ना, कि घर वाला भी स्मार्टफोन वाला भी बहुत सस्ता प्लान्स है। जापान में वो नहीं है। सो जापान में वो थोड़ा महंगा है। एनीवे, सो द वाटर इज अबाउट दिस मच। तो लेकिन अगर एक बार खरीदेंगे और हमेशा नल के पानी से बोतल भरेंगे तो आई थिंक ऑलमोस्ट ज़ीरो। ठीक है। खाना पीना, अगर आप रेस्टोरेंट में खाना खाना चाहते हैं तो उतना मतलब कंप्लीट जापानीज खाना इज लाइक 5,000 आप 500 to 800 रुपीज। ठीक है। इससे सस्ता तो आजकल नहीं मिल पाएगा। अगर कंट्री साइड में बहुत सस्ती जगह जाएंगे, या हाँ स्कूल स्टूडेंट्स के लिए जो रेस्टोरेंट है तो और थोड़ा सा सस्ता भी मिल जाता है। बट इफ़ यू गो आउटसाइड टोक्यो में, देखो टोक्यो में बाहर खाना खाना चाहते हैं, एंड इफ यू वांट दिस काइंड ऑफ जापानीज कंप्लीट फूड देन इट स्टार्ट्स फ्रॉम 500 रुपीज। ठीक है। एंड ऑफ कोर्स अगर कन्वीनियंस स्टोर कहीं शॉप पे एक दो तीन ओनिगिरी खाना चाहते हैं तो ओनिगिरी इज लाइक 70 रुपीज फॉर वन। तो पेट भरने के लिए कम से कम दो चाहिए। आई थिंक लड़के हैं तो तीन तो खाते होंगे। सो अगर इफ यू ईट 3 ओनिगिरी फॉर लंच देन इट बी लाइक 210 रुपीज। या उतना ही तो लगता है। सो आई थिंक सस्ते से सस्ते आप एक मील 300 रुपये में खा सकते हैं। और ज़्यादा खाना चाहते हैं, महंगा खाना चाहते हैं तो ऑफ कोर्स इट्स गोना गो अप। तो नाश्ते में ज़्यादा नहीं खाएंगे आई थिंक। सो नाश्ते में देखो 200 रुपये में हो जाएंगे। और लंच और डिनर, लंच में लेट्स से 400-500 रुपये में हो जाएंगे। और डिनर में बाहर खाना खाना चाहते हैं तो 800 रुपये 1,000 रुपये तो लगते हैं। ठीक है। तो these are the basics। ठीक है। तो कितना हुआ? Let's say if you live in like 40,000 rupee rent, then 40,000। एंड अगर आप एक दिन में बेसिक खाएंगे, let's say you eat some kind of like onigiri for morning, so let's say like 200 rupees। ठीक है। फॉर ब्रेकफास्ट एंड लंच और डिनर के लिए लेट्स से 500 रुपीज फॉर ब्रेकफास्ट लंच, एंड देन 800 फॉर डिनर।
then it's gonna cost like 1500 रुपए लगेंगे एक दिन का खाने के लिए अगर सब बाहर में खाएंगे तो and then if you eat multiply it with 30 days which is like 1 month then हाँ 45,000 rupees हो जाएंगे तो अगर खाना नहीं बनाएंगे और हमेशा बाहर का खाना खाएंगे तो the food cost will be 45,000 rupees per month. ठीक है? So what do you think? Is this expensive or cheap? So also if you add rent, then खाना पीना, gas, water ये सब मिला के I think 100,000 rupees कम से कम चाहिए ठीक है और बाकी कपड़े खरीदना है या क्या खरीदना होगा आप ट्रांसपोर्टेशन अगर कंपनी नहीं ट्रांसपोर्टेशन नहीं दे रहे हैं तो I mean usually company pays ठीक है so I think that much और जापान के बेसिक सबसे सस्ता सैलरी is like I would say like 25 man, which is like 25. So 15, I think the Japan के first year बनाते हैं 1.5 lakh. So yeah, that's the cost of living, I guess, in Japan. So 1,015 so per day and it's below average. अगर आप खाना हमेशा बनाएंगे तो it could be cheaper. But I think most Japanese people, if you're working and don't really have much time to cook, then it's like 1,000 rupaye per day is I think average. आज आप क्या लिखा है डिनर में क्या खाओगे डिनर खा लिया मैंने I had some ओकिनावा food ओकिनावा जापान के सबसे दक्षिण में पड़ता है और वहाँ का खाना खाया है ठीक है and those are my calculations so now let's see what's the statistics of Japanese people's cost of average सबसे पहले जापान के average income देखते हैं so the Japanese people's average income is like 4 million Japanese yen for a month 4 million Japanese yen is like 3.5 wait no 230 well 2.3 million Indian rupees ओके मिलियन को जापानीज में हिंदी में क्या बोलते हैं मेरा दिमाग आज ठीक से काम नहीं कर रहा है ओके सो 23 लाख जापानीज येन ठीक है 23 लाख जापानीज येन इज ऑफ no 23 lakh Indian rupee is Japanese people's average yearly salary ठीक है तो सब इतना मतलब एवरेज बनाते हैं ठीक है याद रखना 23 लाख इंडियन रुपीस ठीक है एंड सब लोग okay so the average expense of Japanese people is 3 lakh yen which is like 1.7 lakh it doesn't really make sense though because I feel like the more people are using more money oh anyway so anyways my calculation was lagbag tikta so I think it was good so that's how Japanese people spend and make
सो कुछ लोग बोलते हैं, कुछ इंडिया लोग बोलते हैं कि जापान में आके ठीक है इंडिया से ज़्यादा सैलरीज मिल जाते हैं पर calculate in monthly basis. Okay, so the average Japanese people's monthly salary is like 35 man, which is like I'm getting really wait 22 lakh. So the जापानी लोगों के एवरेज सिंपल करती हूँ ठीक है जापानीज लोगों के सिंपल मंथली इनकम इज 2 लाख रुपीस ठीक है according to the internet but at the same time according to the internet the statistics show the average expense per month is also 2 lakh rupees it doesn't make sense लोगों के जो सेविंग्स नहीं है क्या I guess because it's the average some people spend more some people make more and then spend less so it does this average doesn't seem to be right but yeah I think that's the thing so but okay to be exact one point wait to be exact yeah but people doesn't seem to have much savings that's very funny so yeah but that's right so the average monthly income of Japanese people is 2 lakh rupees and then the average spending per month is 1.7 lakh so people only save 30,000 rupees per month huh that's sad though I feel like people are saving more but I guess that's the truth so yeah savings zero yeah but to be like exact 30,000 rupees per month is the savings of average Japanese people that's statistics it's kind of sad I don't think people can make a lot of savings out of this but that's the truth and yeah, a lot of Japanese people now, especially the young generations, are saying that वो सब चीज़ें महंगी होती जा रही है और सैलरी इंक्रीज नहीं हो रहा है इसलिए ज़िंदगी मुश्किल होता जा रहा है so that's what Japanese people are feeling and I guess according to the statistics it's actually right और इंडिया लोग ऐसे कुछ जापान में काम कर करके कुछ लोग ऐसे बोलते हैं कि ठीक है जापान में इंडिया से ज़्यादा सैलरीज मिल जाता है पर एट द सेम टाइम इस्तेमाल भी मतलब एक्सपेंस भी ज़्यादा है सो यू कैन नॉट सेव अ लॉट ऑफ मनी विच इज़ ट्रू लगता है वो सही है सो अगर जापान में काम करना चाहते हैं तो कुकिंग सीख के आना पड़ेगा बट दैट्स राइट है ना कि कुकिंग सीख के आना पड़ेगा otherwise you have to eat outside spend a lot and then savings नहीं बना सकते हैं है ना but this is not the case if you are a student ठीक है अगर स्टूडेंट में के रूप में यूनिवर्सिटी में पढ़ाई करेंगे तो इनकम नहीं होगा but you can eat in the canteen or you can stay in the dormitory of the university so the इतना महंगा तो नहीं पड़ेगा फॉर एग्ज़ाम्पल मैं जब वो मैंने सुना है कि कुछ कॉलेज में 2,000 रुपए का डॉर्मिटरी भी है which is a very rare case most dormitory are not that cheap पर कुछ बहुत सस्ता डॉर्मिटरी भी है जो 2,000 रुपए पर मंथ आप रह सकते हैं या शायद 10,000 रुपए पर मंथ में आप डॉर्मिटरी में रह सकते हैं so there are some cheap cheap dormitories too so depends which kind of life you want to live है ना do you know what the name of the special type of supermarket where you get stuff for wholesale I heard it's better
than going to convenience. Yes. So in general, convenience store is a little bit expensive compared to the supermarket. So I don't prefer buying stuff from convenience because ये थोड़ा सा मतलब 10 रुपए 20 रुपए का फर्क है. But it could be a lot if you know pile up. एंड सुपरमार्केट का होलसेल की बात करेंगे तो yes there is a supermarket called Gyomu Super ठीक है Gyomu Super so Gyomu is like it's not exactly the wholesale but वो बहुत एक बल्क बहुत बड़ा है अगर सब्जी खरीदना चाहते हैं जैसे कि लेट्स से गाजर खरीदना चाहते हैं if you buy the carrots in supermarket it's like 3 carrots in one packet ठीक है but ग्योम सुपर में 5-10 कैरोट्स एक साथ बेचते हैं इसलिए कभी कभी मतलब ज़्यादा रेस्टोरेंट के लोग खरीदने जाते हैं but if I compare the price per one carrot then sometimes I feel like it's not that cheap इतना फर्क नहीं है फॉर्मेट के हिसाब से ऐसा लगता है कि ये शायद एक कैरेट के लिए सस्ता होगा पर अगर एक एक कैलकुलेट करेंगे तो समटाइम्स आई फाइंड इट जस्ट लाइक नॉट स्कैम बट आई फील लाइक इतना तो सस्ता नहीं है सो द बेस्ट एंड देन सुपरमार्केट हैज़ डिफरेंट ग्रेज सो अगर महंगा वाला सुपरमार्केट जाएंगे तो पैकेजिंग ठीक है लाइक देखने में अच्छा है पर थोड़ा मतलब महंगा है एंड देन ऑल्सो लाइक मॉल के जैसे कि सुपरमार्केट इंडिया में भी थोड़ा महंगा होता है ना वैसे ही जापान में भी थोड़ा सा ज़रा अच्छा सर्विस है एटमॉस्फेयर इज़ गुड बट चीज़ें महंगी है ऐसा महंगा वाला सुपरमार्केट भी है और सस्ता वाला सुपरमार्केट भी है मेरे घर के नज़दीक एक बहुत सस्ता सुपरमार्केट है और मुझे ये पता था पहले से इसलिए मैंने घर इसके नज़दीक लिया है बिकॉज आई यूज़ सुपरमार्केट एवरी डे सो इट्स बेटर टू यू नो लिव नियर द चीप सुपरमार्केट लेकिन इस सुपरमार्केट के अंदर कितना मतलब वो रास्ता है ना वो बहुत नारो है तो थोड़ा चलना मुश्किल है but it's very cheap one of the cheapest supermarket I know in Tokyo so इसलिए I live near that specific supermarket so if you are choosing the house in Japan then थोड़ा नज़दीक सुपरमार्केट देख लेना चाहिए और सस्ते सुपरमार्केट के नज़दीक रहना सबसे अच्छा है that's my recommendation ठीक है But yeah, combini is kind of expensive. लेकिन 24 hours चलती है combini इसलिए रात को 9-10 बजे सुपरमार्केट ये सब बंद हो जाते हैं ना इसलिए 9-10 बजे के बाद मुझे अगर कुछ चीज़ें चाहिए तो I go to combini and buy something. But I prefer to avoid it. और क्या क्या एक्सपेंस होगा जापान में आई डोंट नो मेरी ज़िंदगी में इतना शॉपिंग नहीं है बट अगर कपड़े खरीदना चाहते हैं तो इट्स नॉट एज चीप एज इंडिया आई गेस लाइक इन आजकल इंडिया में भी यूनिक्लो शुरू हुआ ना यूनिक्लो इज़ अ जापानीज कंपनीज एंड एक टी शर्ट के लिए आई वुड से 1500 रुपये 1500 येन से शुरू होता है यानी कि 1,000 रुपए से शुरू हो जाता है जापान में so that's like the cheapest type of clothing in Japan outfits in Japan so if you buy the new clothes then it starts from 1,000 rupaye which is also like cheap t-shirt मेरे हिसाब से so if you want even cheaper clothes outfits then you should get the second hand But I like second hand in Japan. Like second hand के clothing store जाना मुझे बहुत पसंद है क्योंकि महंगी क्लोथ इतने सस्ते में बेचा जाता है और बदबू भी नहीं आता है सब लोग वॉशिंग करते हैं घर पे जापानीज पीपल आर वेरी क्लीन कि रोज़ हमेशा अच्छे से लॉन्ड्री करते हैं सो I don't mind buying from thrift shops like second hand clothing store and then घर पे धोती हूँ and then I wear. So
I like that. And it's good for the environment as well. So if easy. So if a man has two kids, a housewife, and none of them can cook and a pet, and the family's monthly income is 2 lakh, how much would it cost per month to cover all expenses? Just curious. Good question. So, like, I gave you the idea of like average. Yes, average. Yes, according to the internet, it's average. But I feel like it's really cheap, right? I also feel like okay, I know like अगर आप यूनिवर्सिटी में पढ़ाई करेंगे and then if you get a decent job, I feel as far as I know, they make like 30 lakh Japanese yen in the first year as a yearly income. So which becomes like 2 lakh per month. So I think most college graduates make like 2 lakh rupees per month in the first year. और उसके बाद like it increases. So I know that kind of people only, honestly. So but they even wait to get married, wait to have kids because they don't feel like they can take care of their family, like wife and kids. और आजकल जापान में housewife is not really an option for most people. Like अगर आप average कमाते हैं तो you can't become a housewife. You can't make your wife to be the housewife because it doesn't make sense, right? And then Japanese people start to hesitate having babies because they don't have enough money to take care of. So that's the one of the biggest reasons why the Japanese population is shrinking. And pet is a symbol of rich people, in my opinion. कि मुझे लगता है कि अगर आप एवरेज कमाते हैं तो पेट संभालने का पैसा नहीं बचेगा. So I think Japanese, like especially younger generations, are getting poorer and poorer, and वो बातें तो होती रहती है. और जैसे कि 4-5 दिन पहले से this strike has been going on in front of the parliament कि tax थोड़ा कम कर दो ऐसे. So the younger generations are joining to this strike. I don't think that strike has like the legit reasons. I mean, like just the society is like economy is like that. Like you can't really decrease the tax easily just because you're poor, just because you don't want to pay tax. So I don't think that strike and demo is not really making the point. But then the people's mentality is like rather working hard, rather trying to find the better job, but let's go to the parliament and then ask them to lower the tax. Like, I think like the Japanese people are not as rich or not as successful compared to what the foreigners think of Japanese people. Like that's my opinion. Anyway, the conversation is getting a bit deeper and darker. Okay, my dorm room in Gunma will be 3 lakh yen. Huh? Which includes entry fee. 6 months. Okay, 6 months. So 6 months pay 3 lakh. 563. So like 50,000 yen per month, which is like 25,000 or 30,000 rupees per month. So it's like the within the average, like no normal, I would say, but the cheaper side because it's your dormitory, not the gar. Nice. Are we the only ones who eat karela vegetable, or do Japanese people also eat it? Because I don't like that vegetable, but my mom really liked that vegetable. Funny because I had karela for dinner
So in normal Japanese dishes, karela is a little bit rare. But आज रात को मैंने ओकिनावा प्रिफेक्चर का खाना खाया है. Okinawa is like the south, like the southeast prefecture in Japan, like जापान के सबसे दक्षिण में पड़ता है ओकिनावा प्रिफेक्चर. वहाँ पे करेला का खाना बहुत पॉपुलर है और आज रात को मैं इसी दक्षिण ओकिनावा रेस्टोरेंट गई थी. So I had karela. And I think most people like karela, especially like adults who love alcohol, like beers के साथ karela अच्छा माना जाता है. So I think a lot of people eat karela, which is called goya in Japanese language. Okay, so yeah. So anyway, I feel like whenever I talk with Indian people, of course, a lot of people have different kinds of problems in any country, but देश के भविष्य की बात करेंगे तो इंडिया के लोग भारत के भविष्य को ब्राइट समझते हैं, विच इज़ ग्रेट. कि आगे मतलब चीज़ें अच्छी होती जा रही है, भविष्य बेहतर मतलब होगा ऐसा, लाइक पीपल आर होपफुल अबाउट इट. पर जापान के बात करेंगे तो जापानीज यंग जनरेशन लिटिल बिट losing hope कि भविष्य अच्छा हो जाएगा because the population is shrinking, things are getting expensive, but the salary is not increasing. So I think, in my opinion, the people are less hopeful about the future in Japan compared to India, which is sad though. Um, Anicat, I can eat really spicy karela, but I cannot eat sweet karela. अरे sweet karela भी होता है क्या? I have never tried. I should try. What's the name of sweet karela? Tell me. I'd love to try though. But yeah. And I think karela can be tastier in Japan, in India, because मसाले से थोड़ा वो कड़वापन मिट जाता है ना. But Japanese food is very, you know, blunt, I would say, कि इतना स्पाइस नहीं डालते हैं तो करेला का कड़वापन भी एंजॉय करते हैं. But if you don't like anything bitter, then you can't really enjoy karela, right? Anime's feeling मायो क्यूटी हो. अच्छा मायो नहीं हूँ मैं रेंका हूँ, ठीक है. मायो जी ने आज ना स्टोरी पे मेरा वो जो पोस्ट शेयर किया है, which is great. But I am Renka, don't make mistake. तो हाँ ऐसा है. आपको कैसा लगता है, आप इंडियन लोगों से मैं पूछना चाहती हूँ कि आपको लगता है कि आपकी ज़िंदगी बेहतर हो जाएगी, भारत एज अ देश अच्छा हो जाएगा? व्हाट डू यू थिंक? Have you been to Gunma? I'll be going there for long course for July onwards. So me excited. I heard they have onsen there ne. I don't know if I have been to Gunma though. Like I think I've never been there. Huh. But I'm sure it's beautiful. Sometimes you might get bored because Tokyo जैसे entertainment इतना नहीं होगा गुम्मा में. But if you like the nature there, I think you will like it. And yeah, I think the Gunma has good onsen. So please enjoy. Jakuni X. Now I get why not marrying suddenly feels like 100 times better option. Yeah, especially for men, like लड़के लोगों के लिए ना शादी might not be as exciting as you might feel. अगर of course like if you want a baby, then a marriage makes sense. But if you are not going to, like if you don't want a kid, then क्यों शादी करेंगे यार? है ना? So that's problem in Japan. Like लोग शादी से इतना पसंद नहीं करते हैं. But like the general understanding is like लड़कियां ज़्यादा शादी करना चाहती हैं और लड़के लोग शादी से भागना चाहते हैं. Because it will come with the responsibilities. And अगर लड़की ज़्यादा पैसे कमा रही है तो that's not the case. But लड़का
अगर लड़के लोग ज्यादा पैसे कमा रहे हैं, लाइक इफ द हस्बैंड मेक्स मोर देन द वाइफ, देन शादी के बाद ये पैसे जो है वो आधा आधा माना जाएगा. एंड इन वर्स्ट केस लाइक पैसे सब लड़के वाइफ मैनेजमेंट करेंगे. And then husband has to live on like very small amount. अगर डिवोर्स करेंगे तो ये जो दोनों के पैसे हैं वो आधा आधा हो जाता है. So if the wife is making less, or if the wife is a housewife who doesn't make money, they still get आधा आधा. So लड़कों के लिए शादी मतलब sometimes it's not so great. But if the wife makes more, then that's the opposite. So yeah, that's Japan. And if you don't get married, then of course you don't have kids. And बच्चे तो कम होते जा रहे हैं जापान में. Anikat, I mean, my mom make it using spices. Don't know about future. It is unpredictable. Okay, interesting. Yeah, but I think India में like arranged marriage का cultural अभी भी है. अगर आप खुद partner नहीं ढूंढ पा रहे हैं, then your family can also help looking for the partner for marriage. जापान में अरेंज्ड मैरिज का कल्चर नहीं है, तो खुद ढूंढना है. खुद ढूंढने का एबिलिटी नहीं है, इतना अट्रैक्टिव नहीं है, तो जिंदगी भर अकेले रहना पड़ेगा, विच इज सैड आई थिंक. सो दोनों देश में I think like in younger, like I think the young Japanese people think that arranged marriage is not good because they want to choose their partners on their own. But if you're like 40 years old and looking for the partner and still not being able to find, then they will feel like, oh, arranged marriage is such a good option because खुद ढूंढने की जरूरत भी नहीं. I think that's the mentality. जापान रह सकता है. Of course. I have a question. कोई इंडियन परमानेंट जापान रह सकता है? परमानेंट की बात करेंगे तो बहुत लंबी कहानी है. So for example, if you have a Japanese wife, then as long as you are married, I think you are safe to live in Japan. And if you live in more than I think 7 or 8 years, and if you are good in Japanese, and there are some conditions that you have to clarify, but if you have all those things that you have to reach, then you can get the special residential status in Japan as a foreigner. Also, if you are like director in Japanese company, like जैसे कि अगर आप जापान में कंपनी बनाएंगे, and for that you have to pay a lot of money, like I think 5 million Japanese yen, which is like 2 million 2.5 million Indian rupees. अगर इतने पैसे डाल के अगर जापान में कंपनी खोलेंगे, तो I think you can get like director visa and then you can live in Japan. तो अलग अलग तरीके हैं, रास्ता है. So depends how you want to live in Japan. Aniket, not just Japan, I think everyone in the future population will go down. I think it will be definitely. हाँ, पर इंडिया में नहीं है ना. इंडिया में जनसंख्या तो बढ़ता जा रहा है यार, कि यंग generations are more than the older generations. तो इसका मतलब when the young generations are, I mean the country will grow, I think. उचेहा कार्तिक, रेंका दीदी आपका बर्थडे कब आता है? अरे मैंने बोला था ना, मेरा इंट्रोडक्शन वीडियो तो देख लीजिएगा प्लीज. आप लोगों ने देखा है क्या इंट्रोडक्शन वीडियो? बता दीजिए. The first person who guessed will win the prize. I don't know if you can. I don't know which kind of prize I can give, so. But it's okay. I don't know how to, वीडियोस आप लोगों को पसंद है या ऐसा लाइव स्ट्रीमिंग पसंद है,
या जापानीज ट्यूटोरियल वीडियो आज का मैंने बनाना शुरू किया है बट डू यू लाइक इट और नॉट लेट मी नो. तो मैं अभी सोच रही हूँ कि थोड़ा और जापानीज भाषा सिखाने का वीडियो डाल दूंगी एंड देन उसके बाद लाइव स्ट्रीमिंग में भी थोड़ा सवाल जवाब करूंगी ताकि people can kind of learn Japanese live ना कि वीडियो बट देखते हैं अगर people are interested then I'll do so. नहीं तो ऐसे थोड़ा जापान के बारे में बताती रहूंगी बट प्लीज लेट मी नो. तो आज के लिए आई थिंक इतना ही. आई होप यू लाइक you enjoyed my video and to sum up, so I think I showed all the expensive average expenses in Japan. So जापान में अगर काम करेंगे तो एवरेज 2 लाख रुपए कमा सकते हैं ठीक है मंथली. और अगर जापान में थोड़ा मतलब नॉर्मली एक्सपेंस करेंगे तो द एक्सपेंस विल बी 170,000 rupees. So if you live like an average life by making average money and by expensing the average amount, then it's gonna be like 30,000 rupees savings per month. So ये ज़्यादा है कम है वो आपके ऊपर है. And of course if you live decent, you know, अगर आप घर पे हमेशा खाना बनाएंगे तो you can make more. So depending on that you can try deciding whether living in Japan is a good choice or not. But I think this is like Japanese average, right? Indian average की बात करेंगे तो as far as I know, a lot of Indian people living in Japan, working in Japan, are engineers and they make a lot more money than the average Japanese people. So if you are one of those people, then you can make a lot more. So don't worry about it. Which Anikat, which vegetable that are not available in India that are not available in India, only available in Japan? Which are the vegetables that we don't know about? Vegetable. Japanese vegetable. Good question. I think mostly same, but थोड़ा अलग है. जैसे कि I like cucumber in Japan, but I don't like cucumber in India because tastes are different. Cucumber in India has this bitter taste in it, but Japanese cucumber doesn't like is not bitter at all. So raw खा सकती हूँ मैं जापान में. And I think the thing is if there are like the Japanese traditional veggies that are not found in India, I don't know the English name. Okay, in that case, I'll talk about vegetables and fruits that are special in Japan in next video with photos so that I can explain because I need to learn the English and in advance. What do you think happens when a girl can't find a partner and does her family help or is she on her own? I think nowadays, they are on their own. So they can try, but it's not easy. So the family helping for finding partner in Japan is very rare. So you can't really expect the family's help. You have to do it yourself, which is not easy. मुझे भी ढूंढना है यार. रेंका दीदी आप प्लीज लाइव जापानीज क्लासेस स्टार्ट करो. ओके आई विल ट्राई. ओके बट पहले आप थोड़ा वीडियो देखकर भी पढ़ाई कीजिए बिकॉज लाइक teaching everything in life is not easy. So अगर आप थोड़ा बहुत वीडियो से सीख लेंगे and कुछ सवाल है then I can do easier with live classes. I think. What do you think? Because editing में थोड़ा मतलब समझाना because like you want to write things up when you are teaching. Main presentation like Google Docs ये सब इस्तेमाल करके पढ़ाने की कोशिश कर सकती हूँ. But eventually to teach properly I think the editing is necessary. तो लाइव पे तो सवाल जवाब
आसानी से कर सकते हैं. But if you want to teach from like learn from scratch, I think वीडियो से सीखना ज़्यादा आसान रहेगा and effective and efficient. Good night, dear Renka-san. Thank you, Prince. Anicat, in which only vegetable available in India that are not available in Japan? This is not vegetable, but chiku. Chiku is not found in Japan. Chiku India में ही होता है, I think. So when I visited India, first time I saw chiku, I thought it's a potato. And मैं सोच रही थी कि क्यों आलू सब्जी की दुकान नहीं फल की दुकान में होगी. Like I was wondering, like I thought chiku is a potato because I've never seen it. So that's one thing. बाकी के vegetables I think जापान में भी है. Like for example, coriander is not really Japanese veggies, but I these days एक सुपरमार्केट में भी कोरिएंडर मिलता है. 10 साल पहले तो इतना ज़्यादा नहीं था, बट आजकल तो इम्पोर्ट लाइक दुनिया भर के खाना जापानीज लोग एंजॉय करते हैं. सो द इवन लाइक नॉर्मल सुपरमार्केट्स द कोरिएंडर इज अवेलेबल. सो मोस्ट बट द ड्रमस्टिक अभी तक I saw that only in Nishikasai area, which is like famous area that Indian people live. तो Indian grocery store supermarket जापान में भी है और उसमें drumsticks मिलते हैं, but in normal supermarket we never find drumsticks. Saiji, so dating till the end, no marriage is the ultimate combo. Yeah, I think unfortunately it is. Worst thing about marriage is relative they poke too much in other people's business. I think India में ये ज़्यादा है. I don't want to say Indian लोग ऐसा है, Japanese लोग ऐसे हैं, because everyone is different. There is always exceptions, but generally like average की बात करेंगे तो Indian people have deeper connection with relative, which is good. But ज़्यादा सवाल पूछा जाता है, ज़्यादा sometimes it's too much deeper. I don't know. Japanese relatives, they don't meet much. So I know some people who only meet relatives like once in like 3-4 years, which is normal. So and जापान में ज़्यादा रिलेटिव्स नज़दीक नहीं रहते हैं, दूर दूर रहते हैं. So we don't try to stay together. अगर दूर में कुछ काम है तो we just go. We don't choose places to work based on relatives and families. So as a result, a lot of families and relatives live across Japan. तो साल में एक बार 2-3 साल में एक बार ही मिलने वाले families relatives भी बहुत हैं. So the connections with relatives are not so deep in Japan. But इंडिया में तो अलग है. दिवाली होली ये सब त्योहार में इकट्ठे होके साथ में मनाते हैं, which is great. But sometimes you want to avoid some good like deep questions. I understand. A drumstick curry today is in my home. It is my favorite. Great! So आप जापान में अगर रहना चाहते हैं तो choose निष्कासाई. In निष्कासाई you can get drumsticks. ठीक है? So anyway, thank you so much for watching, and please watch some Japanese tutorial videos if you want to learn, and then I'll see if how many people are interested. Take it. Okay, this is the last comment I'm gonna read, I guess. Drumstick curry. It was the first curry that I ate in my life. By the way, I am from Maharashtra, and the curry was spicy. I mean, how? I don't believe you. ठीक है? I eat like first thing you ate in your life. You never remember it. इतने मतलब कितने साल के थे आप? I don't remember the first thing I had because I was too small. You will find your relatives during your marriage, and the result they yeah, I know Indian culture, and it sounds really exhausting, honestly. Why don't Japanese people chat online? They do, but they are shy, so maybe they don't reply too much. मेरा कल पेपर था. अच्छा एग्जाम था.
I would say congratulations. I hope you nailed it. Yeah. Um, I'm sorry. Did I break your concentration? Okay. 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 Anyway, thank you so much for joining and 필름을 한 ticket and all the best to your exam for students. Okay. Bye.